Okay, so first of all, just tell me, what do you understand by the fins? Fins. Sir, fins are the extended surfaces from any body which are used to increase the heat transfer. Okay. What kind of fins are used over the over the cylinder of a two-stroke engine? Sir, what type? Like the fin kinds, fins What kind of are fin? What is the like name of the fin which is used over the cylinder of two-stroke engine? the name, the thin sheet type fin are used. I don't know the exact name of the fins. Okay. Okay, that is okay. Okay, and what is effectiveness of the fin? So effectiveness of the fin, it is a ratio of the uh, Hmm. heat transferred by the fin and without fin. If the fin was not there, then what is the amount of heat transferred and what is the amount of heat transferred with fin? That is the ratio. How do you calculate the heat transfer without fin? So heat transfer without fin is the Q equals Hmm. to HAC delta T. In this, the AC is a cross section where the fin has to be attached, and delta T is the temperature difference between the surrounding and the temperature of the body for which the heat transfer is to be accumulated, and H is the heat transfer, convective heat transfer coefficient. Okay. Okay, that is okay. Okay, let us suppose if there's a flat plate which is placed in a flowing fluid. In that case, how does the Nusselt number varies from the leading to the trailing edge? Sir, Let us say the flow is laminar. okay, for laminar flow. Sir, Nusselt number it is directly proportional to the Reynolds number to the power 1 by 2 and Prandtl number to the power uh, 1 by 3. So for laminar, the heat transfer H will be decreasing, sir. Exponentially, it will be decreasing uh, by 1 bar, X to the power 1 by 2. Exponentially, it is decreasing. No, sir. H is inversely proportional to root X. Yeah, With I'm the just saying, how does the Nusselt number varies? What is the variation of Nusselt number? Not the heat transfer coefficient. Nusselt number. The Nusselt number also varies with X, which in that same relation only. Okay, and what about the heat transfer coefficient? It is also decreasing. Why is it decreasing? So because when X increases, then the thermal boundary layer increases. Like when Hmm. X increases, and also this leads to decrease in H, and also the heat transfer decreases because the thermal boundary layer act as the insulation for the heat transfer. Okay, and how does the temperature gradient varies from the leading to the trailing edge? Temperature. Hmm. So temperature also decreases, but relation, so that I don't. Okay, and why the temperature gradient is decreasing here? Temperature, because of the convective heat transfer is decreasing, H is decreasing. Due to So, the convective heat transfer. Hmm. so that decreasing convective heat transfer and increasing Hmm. boundary layer. Okay, and what is the difference between the kinematic viscosity and the thermal diffusivity? So kinematic viscosity represents the molecular diffusivity Hmm. of the that is the molecular diffusion, molecular transfer of momentum, Hmm. molecular momentum transfer in the fluid. Whereas Hmm. the thermal diffusivity represents the thermal momentum transfer. Uh, Okay. Okay, that is okay. Let us suppose if you want to, let us say you have a two vertical bars, two bars, okay, which you want to join something like this. Okay, you have to perform the welding at the joint in order to join these uh, two rods. Okay, then tell me how much amount of heat is being required to melt these two to join these two bars in this vertical how much position heating in this required? position. How much heat? What is the amount of rate of heat transfer here? Amount At of which rate you have to supply the heat in order to weld these two bars in this horizontal position. You can assume anything, whatever you want. the amount of heat Hmm. from one heat, So, so from one bar to another bar, or like no, we no. can we have to You have two bars, okay, and you want to connect these two bars. You want to do the welding of this bar in this way, okay. okay.
So see here you want to join at this interface, and you are just performing the welding operation. So in that case, how much amount of what will be the rate of heat transfer required to join these two bars like this? Let us say if the surrounding temperature is very low and the road temperature are same. The heat which we have to give V equals to Yes, in the welding terms, we can say the power, the heat will be V into I, which is voltage difference which we will create to melt the material. okay. Anything else? And sir, the material, the thickness of, for this we will require the that Just do that. property of the material which will be required to melt the material, that heat Just capacity. Through this okay. we can calculate the heat. Okay, that is okay. Okay, okay. Okay, just tell me one thing. Let us say if you have a composite slab, okay, which is made up of aluminum, steel, and copper. Okay. In Aluminum. that case, Okay. aluminum, steel, and copper. And in this case, let us say if the heat generation is taking place in the central portion, that is steel portion, then what will be the temperature profile if the thermal conductivity of aluminum and copper are varying with the temperature? And steel is for steel K is constant. Yes. There's a uniform heat generation taking place in the steel. So parabolically they will uh, Just temperature show me the profile we temperature. need. Just show me the temperature profile. Okay. Okay. Do you think that your temperature profile is correct in the steel portion? Why the slope is slope of the curve in the steel region is continuously decreasing from the center toward the edges? So I think it is constant. What will be the temperature profile in the case of simple slab So, in which uniform heat generation is there? yes, sir, it should be linear, sir. And still it should It be should be linear, linear. then Okay, just prove yes, me sir. that it is linear. Just give me a mathematical proof. Yes, so we will proceed by equation d squared t upon dx square Hmm. plus ugx upon k plus 1 upon alpha dt by dt. And if we solve this and then we can get Just show me uh, the derivation. Just do a one or two step. internet resolution. Because it can't be linear. It has to be parabolic. If Okay, you so go I from took like yes, I just took start with like the a two generalized heat conduction equation. Start with the generalized heat conduction equation and prove me. parabola. It is parabolic. Okay. So just show me the correct diagram of temperature profile in that case. It's again that same that I showed. Just tell me one thing. Okay. Just mathematically prove me that the slope of the curve is continuously decreasing from the center toward the aluminum and copper side. From the center to the limit. To the aluminum and copper side, where the aluminum and steel is making an interface. Okay. Just prove me that it is continuously decreasing because the graph is not correct. It is wrong. The slope has to be continuously decrease. It has to be continuously increase from the Slow center to fast. the sides. Okay. So mathematical expression वो नहीं आ रहा है.
ओके ठीक है। ठीक है, कोई इशू नहीं। अच्छा, आपके पास यहाँ पे थर्मल कनेक्टिविटी, लेट अस से अगर आपके पास एक ड्राई मटेरियल है और एक डैम्प मटेरियल है, ठीक है, एक ड्राई मटेरियल है, बिल्कुल एक डैम्प मटेरियल है, इन दैट केस विच विल बी हैविंग मोर थर्मल कनेक्टिविटी? Dry and black. यस, ड्राई एंड डैम्प, ड्राई और वेट। And what's our conductivity? So it depends on the material conductivity is a material property, so it will depend on the factors. But for dry and wet material, ओके, आपके पास यहाँ पे विंड डिस्प्लेसमेंट लो, आपको पता है क्या होता है विंड डिस्प्लेसमेंट लो? yes sir. ग्राफिक ग्राफिकली एक्सप्लेन करो, Displacement. ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करो जरा मुझे इसकी। So wind adjustment law is that lambda maximum dot t equals to constant, and graphically sir, like this kind of. ग्राफिकली एक्सप्लेन करो, ये कैसे ग्राफ बनाया है? ये सही ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ तो बहुत अजीब सा बना दिया आपने, बहुत ही अजीब So सा wind, कर्व बना रखे हैं, ऐसे तो कर्व होते ही नहीं। सर ये e and I think lambda के बीच में होता है। अच्छा, आपके पास मोनोक्रोमेट, सॉरी, प्लैंक्स लो क्या बोलता है? प्लैंक्स लो। Now, Planck's law states that the energy from a heated body is does not comes in the form of continuous form. It does not come in continuous form. It comes in discrete form, in the small point of energy. अच्छा, एंड व्हाट अबाउट दिस स्टीफेंस लो? Sir, both Stephen's law. Okay, Stephen's law states that the emissive power of a black body is directly proportional to the fourth power of the temperature of the body. 4 ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। अच्छा, आपके पास अगर हम प्लैंक्स लॉ की बात करें, प्लैंक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर है, मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर, वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है? So that is the fourth fifth power of temperature of the body. प्रूव कर सकते हो? No, of course not. ओके। अच्छा, रेडिएशन शील्ड हम यूज करते हैं फर्नेस के अंदर टू अवॉइड द हीट लॉस, ओके, तो Yes. उस केस में कुछ प्रॉपर्टीज बताओ, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? सर जो शील्ड है उसकी रिफ्लेक्टिविटी हाई होनी चाहिए, लाइक क्या क्या रिफ्लेक्टिविटी हाई होनी चाहिए? yes, reflectivity high ओके। so that alpha decreases and transmissivity also decreases. ओके, एंड बाकी सब आपके पास? Mm, emissivity. So I think emissivity less than one, that is close to black hole. एमिसिविटी लेस देन 1? एमिसिविटी तो हमेशा लेस देन 1 होती है, और वो हमेशा वन हाँ, से हो ही नहीं सकती। एमिसिविटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए? तो emissivity लो होनी चाहिए। एमिसिविटी लो होनी चाहिए, एंड व्हाट अबाउट द एब्जॉर्प्टिविटी? So absorptivity लो होना चाहिए। एब्जॉर्प्टिविटी भी लो होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे लेट अस से अगर आप यहाँ पे एक रेडिएशन शील्ड इंड्यूस कर रहे हो दो सरफेसेस के बीच में, तो नंबर ऑफ, आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीमेंट होगा? नंबर ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीमेंटेड कितने होंगे आपके पास दो टू। बॉडीज के बीच में? अगर आप यहाँ पे एक सिंपल से रेडिएशन शील्ड इंड्यूस कर रहे हो, तो कितना आपके पास यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा रेजिस्टेंस सर टू नंबर से इंक्रीज होगा बिकॉज दो सरफेस होंगे, लाइक में? कौन कौन से रेजिस्टेंस इंक्रीज होंगे बताओ जरा। सर एक सरफेस रेजिस्टेंस एंड एक हम्म, स्पेस रेजिस्टेंस। ओके। ओके, अक्षय, लेट मी प्रोवाइड माय फीडबैक। देखो, थोड़ा सा एक बार आपके पास फाइनल रिवीजन दो, एक बार हीट ट्रांसफर को एक और बार, ठीक है ना? बेसिक्स नॉलेज तो चलो है ही है आपके पास, यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस देखो, और हीट ट्रांसफर में कुछ कुछ जगह पे लैग कर रहे हो, जैसे कन्वेक्शन पार्ट में नसल नंबर का जो वेरिएशन पूछा, हीट ट्रांसफर कंपनी का जो मैंने वेरिएशन पूछा, उसके रिजल्ट थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो। और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर बात करना उसकी क्या बोलते हैं, रेडिएशन हीट ट्रांसफर को थोड़ा सा ध्यान देना। रेडिएशन हीट ट्रांसफर को ध्यान देने की बात मतलब है कि उसमें जो लॉ है हमारे पास, प्लैंक्स लॉ क्या बोलता है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, और जैसे आपने बोला फिफ्थ पावर का वेरी कर रहा है, तो फिफ्थ के पास क्या कैसे वेरी कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना?
वो जो मैं आपने जो कर्व बनाया था ना, वो कर्व में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स थी। मतलब जब कर्व आपने जो प्लॉट करा है वो सही प्लॉट नहीं करा है। तो पहले आपके पास एनर्जी जो है वो लगातार इंक्रीज हो रही है, फिर एक वैल्यू को रीच कर रही है, फिर वो डिक्रीज हो रही है। आपकी ऐसा कर्व बन रहा है, मतलब आपका अलग से एक कर्व बन रहा है, वो की नहीं होनी चाहिए। तो सही कर्व नहीं, तो रिप्रेजेंटेशन ठीक है। सही करो। और जो मैं आपसे पूछा था थर्मल कंडक्टिविटी, आपके पास यहाँ पर रिगार्डिंग टेम्परेचर प्रोफाइल, टेम्परेचर प्रोफाइल गलत है यार, वो आपको बिल्कुल भी सही नहीं है। सबसे पहले स्टील स्लैब का देखोगे ना, उसमें टेम्परेचर प्रोफाइल ऐसे बनेगा, पैराबोलिक। मतलब कि सेंटर पे आपके पास जो स्लोप होगा वो आपके पास कम होगा, और धीरे धीरे वो लगातार आपके पास इंक्रीज करेगा। सेंटर पे आपके पास स्लोप ज्यादा क्यों होगा, स्लोप कम क्यों होगा, क्योंकि सेंटर पे जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट सेम होगा, लीनियर आपके पास मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे सरफेस के क्लोज जाओगे तो टेम्परेचर लगातार ड्रॉप करेगा, तो आपके पास टेम्परेचर ग्रेडियंट भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद अल्यूमिनियम एंड कॉपर में जा रहा है। अब ध्यान रखना, अल्यूमिनियम एंड कॉपर की जो कंडक्टिविटी है वो वेरी कर रही है, तो दोनों में जो स्लोप बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। क्यों डिफरेंट बनेगा? क्योंकि अल्यूमिनियम एक एक्सेप्शनल मटेरियल होता है। उस केस में अल्यूमिनियम की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ। यूरेनियम एक सॉरी, जो रिमेनिंग कॉपर है वो एक्सेप्शनल मटेरियल नहीं है, वहां पे डिक्रीज करती है थर्मल कंडक्टिविटी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो इन चीजों को इंक्लूड करो, फिर आपके पास टेम्परेचर प्रोफाइल बनाओ, देखो कैसे बना। ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? जी सर, सर मेरा जो इंटरव्यू है वो आरएसी के लिए है, मोस्टली प्रॉपर जो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग है उसके लिए अच्छा, है आरएससी के इसको में। लिए है। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो फिर आपको बेसिक नहीं, फिर भी ठीक है, थर्मल पोर्शन फिर भी आपका कवर अप होना चाहिए सही से, क्योंकि आपके पास मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या क्या हो सकते हैं कंडेंसर इवेपोरेटर में, वो आपको क्लियरली पता होने चाहिए। यस थर्मल सर। कंडक्टिविटी, बाउंड्री लेयर थिकनेस, इसके बारे में हल्का सा पता होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है। और आपके पास ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एज पर इसमें से उसका भी आइडिया आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ओके, थोड़ा तो सा सर ध्यान इसके से लिए मोस्टली आरएससी के ऊपर। रेडिएशन ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ना, इसरो के लिए डेरिवेशन भी पढ़ के जानी रेडिएशन। पड़ेगी, डेरिवेशन भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि डेरिवेशन भी आपसे करवा सकते हैं। ओके सर। ठीक है ना? तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा डेरिवेशन के बारे में हल्का सा पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक डेफिनेशन हर एक टॉपिक में से, क्योंकि आपके पास जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हो सब में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही होते हैं, उसके लिए भी आपको जी पता सर। होना चाहिए। ओके, ओके एनीथिंग सर। एल्स यू वांट टू आस्क? नो सर। ओके, ओके अक्षय, नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू सर।